Hello everyone, how are you? Now, today we will start some natural phenomena of class 8 science topic. Okay? Now, what is natural phenomena? So basically, a natural phenomena is anything that occurs on its own and nature without any kind of human intervention. It is the human without any intervention जो natural phenomena होते हैं this is known as the natural activities जो होती है this is known as the natural phenomena. For example, the weather of place, fog, storms, wind, tide, volcanic eruption, cyclone, all can be categorized as natural phenomena. वॉल्केनो इरप्शन जो होते हैं और जो सुनामी होती है साइक्लोन्स होते हैं these all are natural phenomena. Okay, now these type of natural phenomena, this is lightning. Okay, this is the okay, and this is the ये जो स्क्रीन की बनती है by the nature, these are the natural phenomena. Now, in this natural phenomena, some natural phenomena in this topic, we learn about the lightning and earthquake. So first of all, when we start our lightning chapter, when we start our lightning topic, so we have to know what is charges, okay? Because lightning is depend on charges. So first of all, we have to know what is charges. So right now here, what are the electric charges? Okay. So what is electric charges? We know that every atom comprises of subatomic particles such as electron, proton, and neutron. Okay. So every atom, atom is the made up of subatomic particles, and these subatomic particles such as electron, proton, and neutron. So we can see in this diagram, this is a center part. Okay, this is a center part which is known as the nucleus. Okay, so in this center part, proton and neutron are present. Okay, so now the black circles is denoted neutrons. Okay, and the red circle is denoted to proton. What is the charge present on proton? This is a positive charge. Okay. Now there are some negative charge. This is known as the electron. Okay. इसको हमने किसे भी present किया है? So this is the structure of atom. Okay. So a atom is made up of electron, proton, and neutron. So basically, neutrons and photons, which is present in the center of the atom, and electron, ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अराउंड द न्यूक्लियस. वो कहाँ मूव करते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस. ओके, एंड दिस इज अ, so it means in a atom electrons, protons, and neutrons are present in an atom. Now, all these particles share a common property that they carry electric charge. सभी की सेम प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन गेट पॉजिटिव चार्ज. Electrons have a negative charge on them while protons have a positive charge. We know that atoms carry a balanced charge. However, these charges may sometimes become out of order. Okay? So basically, जो atom carries always protons equals to electrons because atom carries a balanced charge. In a atom, all charges and in a balanced condition. इन सभी charges है वो एक balanced condition में रहते हैं. But sometime out of order. कई बार ये out of कई बार positive charge ज़्यादा हो जाता है, कई बार negative charge ज़्यादा हो जाता है. तो basically अगर हम when we talk about a atom, तो जब हम एक atom की बात करते हैं तो all electrons are equals to the protons. Electrons, all electrons equals to the proton.
ओके, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है तो प्रोटॉन नंबर ऑलवेज 1 होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है तो प्रोटॉन नंबर ऑलवेज 2 होगा। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द प्रोटॉन, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रोटॉन ऑलवेज उसके बराबर होंगे। तो दैट इट मींस कि जो एटम कैरी अ बैलेंस चार्ज, एटम के पास हमेशा एक बैलेंस चार्ज रहता है, बट सम टाइम आउट ऑफ ऑर्डर। कई बार ये चार्जेस क्या हो जाते हैं, कई बार पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, कई बार नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। An object will be called electrically natural if it is carrying a balanced proportion of positive and negative charge, कि जहां पर न्यूट्रल means even proton and electron both are equal, so this type of atom या this type of charge is known as the neutral. Okay, electrical neutral, इसे हम क्या कहेंगे, electrical neutral, because positive and negative both are equal. An object is called a charged object if there is an imbalance of electrons and protons in it. Okay, so it means कि when we talk about the valence atom, so in the valence atom always protons equals to the electron. That's why so this is known as the electrical neutral. But sometimes the electron and proton are imbalanced. So this type of atom is known as the, यहाँ पे हम इसको कहेंगे electrical charge, यहाँ पे हम क्या कहेंगे charged object. This object is known as the charged object when some atoms when positive and negative charge are imbalanced. So this type of object is known as the charged object. इस object को हम क्या कहेंगे, charged object. Now what is the method of charging? कि हम चार्ज कैसे एक्सचेंज हो सकते हैं, what is the method? Method of charging. A body can be charged by rubbing due to friction or by induction. फ्रिक्शन और इंडक्शन के थ्रू क्या हो सकते हैं कि इसमें चार्ज क्या हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं। कोई भी बॉडी है अगर हम इसको रब कर रहे हैं गेट चार्ज, अगर उसमें इंडक्शन डेवलप करें तो गेट चार्ज। The electrical charges produced by rubbing are called static charges. When we rub any object with another object, this type of rubbing and this type of charge, this type of electrical charge is known as the static charges. इसको हम क्या कहेंगे, static charges. Here charging by rubbing, कि हम rub करके कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो when objects like plastic get rubbed with air, it occupies a charge. Similarly, a glass rod gets charged when rubbed with a silk cloth. Okay, तो in general कि हमने कई बार क्या होगा कि हम जैसे प्लास्टिक स्केल उसको हम एयर से रब करते हैं, रब करने के बाद हम कुछ पेपर और पीस के ऊपर अगर प्लास्टिक की स्केल को लेके जाते हैं तो पेपर और पीस उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Okay, so now this is a when we rub plastic scale or air, so it gets some charges. That's why the paper of piece are attract towards the plastic scale. तो वो plastic scale की तरफ attract हो रहे हैं because क्योंकि हमने जब plastic scale को rub करा था तो उसमें क्या हुआ, एक charge generate हो गया है। So that's why वो क्या हो रहे हैं, rub जो paper of piece है वो उसकी तरफ attract हो रहे हैं। When we rub two objects with each other, we get charged due to a transfer of electrons between them. Okay, so we can see in this diagram that this is a silk cloth. Okay, and electron rub of glass rod. कि हम क्या कर रहे हैं, silk cloth को glass rod से rub कर रहे हैं। Silk cloth, and this is a glass rod. Okay, तो हमने क्या किया, जो silk cloth है उसको glass rod से rub किया। So after that, we had found कि जो glass rod है, some charges are occur on glass rod and some charges also occur on silk cloth. So here positive charge occur on
glass rod and सिल्क में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ओके, तो जो हमारा सिल्क क्लॉथ है इट गेट नेगेटिव चार्ज एंड जो ग्लास रॉड है ये कौन सा चार्ज लेंगे उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो when we rub two objects with each other they get charges। वहां पे क्या हो जाता है चार्जेस जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैट कि उन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे बोथ आर गेट सम चार्जेस। They get charged as they gain or lose electron and that is why they can attract or repel the small piece of paper depending on the type of charge they carry। Okay, तो जब हम they get charged as they gain or lose electron, तो when we rub a silk cloth with glass rod, तो जब हम silk cloth को glass rod से rub करते हैं तो वहां पे क्या होता है कुछ चार्जेस गेन किए जाते हैं कुछ चार्जेस रिलीज किए जाते हैं। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करे जा रहे हैं रिलीज किए जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो दैट्स व्हाई कि जैसे हमने स्केल को एयर से रब किया तो उसने क्या करा पेपर और पीस को क्या करा अट्रैक्ट किया और सम टाइम अगर हम किसी और चीज से अगर रब करें तो वो रिपेल भी करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्ज दे कैरी। अब ये डिपेंड करता है कि उसने कौन सा चार्ज गेन किया है। ओके, तो दैट इट मींस कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन चार्जेस हो रहे हैं ड्यू टू द कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है किसके थ्रू हो रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ electrons। Okay, so when we rub two cloths या when we rub one object with another object, so it both objects get some charges, either it be negative and positive charge। Now charge object, okay, तो अब charge object क्या होता है कि objects that carry a charge by means of rubbing or other process are called as charged object। Okay, तो object को हम क्या कर रहे हैं object that carry a charge by means of rubbing or other process are called charged object। object है उसको हम क्या कर रहे हैं रब कर रहे हैं तो that's why वो क्या कर रहा है कोई चार्ज गेन कर रहा है। objects having an excess of electrons are called negatively charged while an object having a shortage of electrons are called positively charged। Okay, so it means the object having an excess of electrons are called negatively charged। In an object when excess of electrons are present, so this type of object is called negatively charged object। Okay, and having a shortage of electrons are called positively charged object। For example, okay, here 1 2 3 4 5, okay, there are 5 हम यहाँ पे देखते हैं 5 मॉलिक्यूल्स है जो 5 मॉलिक्यूल्स किसके हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स के जो येलो डॉट है these are electrons। okay, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 भी पिंक डॉट है। okay, तो जो 5 पिंक डॉट है उसको हम क्या कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज। okay, और जो येलो डॉट है these are negative charge। okay, तो पिंक को हमने कहा है पॉजिटिव चार्ज एंड ब्लू येलो को हमने कहा है नेगेटिव चार्ज। okay, तो हियर देयर आर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 protons and 5 neutrons। this is a neutral condition। okay, here proton was the electrons। okay, but when in the second condition, okay, in the second condition 1 2 3 4 5 electrons are present। okay, and how many protons are present 1 2 3 3 protons are present and 1 2 3 4 5 electrons are present। so what are the object having an excess of electron। यहाँ पर हमारे पास क्या है excess है electrons का। so this object is
charged object. इसे हम क्या कहेंगे? Negatively charged object. And same here 1, 2, 3, 4, 5. 5 हमारे पास क्या है? Positive charge. And 1, 2. 2 हमारे पास क्या है? Negative charge. Okay. So what is the shortage of electrons? Are called positive charge. The shortage of electrons here. Positive charge is more than compared to the negative charge. So that's why this is known as the positively charged object. Okay, तो इसको हम क्या कहेंगे? Positively charged object because यहाँ पे positive charge ज्यादा है और negative charge क्या है? कम है. यहाँ पर हमारे पास negative charge ज्यादा है, positive charge हमारे पास कम है. So that's why it is known as the negatively charged object. Okay. For instance, when a glass rod is rubbed with silk cloth, it becomes positively charged, while the silk cloth becomes negatively charged. ये कि यहाँ पे हमारी जो glass rod है, इसने कौन सा चार्ज किया था? पॉजिटिव चार्ज. और हमारी silk cloth के पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. These charged objects are now capable of attracting other charged and uncharged objects. Okay, it is very important. These charged objects are now capable of attracting other charged or uncharged objects. That's why when we rub our plastic plate with our layer, so it gets some charges. That's why it can attract the piece of paper. इसीलिए piece of paper को attract कर सकती है because it has some charge. जो हमारी प्लास्टिक स्केल है उसमें क्या है? कुछ चार्ज जनरेट हो गया है. That's why वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है. इसमें ये इतनी कैपेबल होती है कि ये किसी अदर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है. Now, when the interaction between light and unlight charges, the light charges always repel while unlight charges attract to each other. ये देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? This is a positive charge and this is a negative charge. So it means जो opposite charges है, opposite charges always attract to each other. Okay, positive charges always attract to negative charges, but same charges are repelled to each other. कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या कर रहे हैं? एरो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन. तो दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. अब ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सेम ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज. एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज आल्सो नेगेटिव. तो सेम चार्जेस आर repelled to each other and opposite charges are attract to each other. तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया. सेम नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर गया, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर गया. तो इट मींस ऑलवेज opposite charges attract to each other and जो opposite charges और same charges repel to each other. दोनों को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. ये डिपेंड करेगा कि हमने जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो उसको हम दूसरी चीज से उसने कौन सा चार्ज दे किया. ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. नाउ हाउ कैन वी ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट? Charges can be transferred through good conductor metals to another conducting material. Okay, charges को हम ट्रांसफर कर सकते हैं good conductors के through to another conducting material. And thus the charges transfer is due to the movement of the electron from one atom to another atom. Now this is the transfer of electron. Before electron transfer, okay, यहाँ पे देखिए there are 1, 2, 3, 4 electrons present in the black cell and 1, 2, 3 electrons are present in the blue cell. Okay, so now this condition is before electron transfer. यहाँ पे अभी electron transfer नहीं हुए हैं. After electron transfer, when the electron transfer हो जाते हैं तो charge transfer involves movement of इलेक्ट्रॉन. तो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये यहाँ पे जो हम अगर when we talk about the red circle, तो which charge present on the red circle? Red circle में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इट मींस दिस इज द नेगेटिवली चार्ज. ओके, अब यहाँ से हमारा एक चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया. ओके, नाउ
ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया तो ब्लू में कितने हो गए 1 2 3 4 तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया तो चार्ज ट्रांसफर हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल रेड में था नेगेटिव चार्ज अब चार्ज कहां चला गया ब्लू so this is a transfer of charge now we start our lighting what is lighting lightning during thunderstorm, air currents move upward and water droplets move downwards. This causes the speciation of charges between clouds and between clouds and the earth. What happened in the rain? ये rain में क्या होता है कि जो एयर करंट है वो कहाँ मूव करता है मूव अपवर्ड डायरेक्शन और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ मूव करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओके रेन के टाइम में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ मूव करती है डाउनवर्ड और जो एयर है एयर करंट वो कहाँ मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये क्या करेगा दिस कॉजेज द सेपरेशन ये क्या करता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन क्लाउड्स एंड बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ ओके तो व्हेन एयर करंट मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन it can separate the ये क्या कर सकते हैं charges it can separate the charges between cloud to cloud and between cloud and earth cloud और earth के बीच में और cloud के बीच में ये क्या करते हैं charges को separate कर देते हैं तो by this charge separation of charges lightning is generated lightning is an electrical discharge or an electrical spark that occur in nature on a major scale. तो lightning क्या है? Is an electrical discharge. Lightning basically what is lightning? Lightning this is the electrically discharge or electrical spark. ये किसके अंदर that occur in nature. मतलब नेचर के अंदर ही lightning हम देखने को मिलती है. ओके और ये कई बार बहुत ज्यादा मेजर स्केल पे डेवलप होती है. It is caused by the accumulation of charges in the clouds. It can be deadly and cause the destruction of life and property. Okay, so it means कि इसके जो lightning का क्या reason है? Accumulation of charges. Charges accumulate होते हैं. उनके due to the accumulation of charges in the clouds के अंदर जो चार्जेस सारे कलेक्ट होते हैं एक्यूमुलेट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है लाइटनिंग जनरेट होती है और कई बार ये डेडली और लाइफ के लिए भी क्या होती है बहुत हार्मफुल होती है नाउ in ancient time period were unaware of the causes of lightning and hence they were scared of it. Nowadays, scientists have evolved some precautions that can help us prepare and protect ourselves from this natural phenomena. कि जो previous time period में कोई भी ये lightning का what is the reason lightning किस वजह से हो रही थी कोई भी ये reason नहीं जानता था. इसकी वजह से सब scared रहते थे सब डरे हुए रहते थे. तो अब जो साइंटिस्ट ने हमें इसके रीजंस बता दिए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द लाइटनिंग ओके तो नाउ व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इंक्रीज इन एयर नॉर्मली अ बैड कंडक्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग एंड दिस फ्लो ऑफ चार्जेस आर accompanied by bright stripes on light and sound when the magnitude of charges increasing in air basically air क्या होती है नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है बट समटाइम जब चार्जेस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो एयर भी कुछ नहीं कर पाती है तो जो इंक्रीजिंग चार्जेस इंक्रीजिंग हो जाते हैं एयर स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एयर क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देती है फ्लो करने दिस इज कॉल्ड lightning ये क्या है ड्यू टू द accumulation
is occur. As this flow of charge is accompanied by bright strike of light and sound. कि जो लाइट हमें दिखती है ड्यू टू लाइट दिस टाइप ऑफ लाइटनिंग, इस तरह की जो हमें लाइटनिंग दिखती है दिस इज बेसिकली ब्राइट लाइट एंड स्पार्क एंड साउंड। साउंड और लाइट की वजह से हमें क्या दिखती है, ये स्ट्राइक जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस है जो इलेक्ट्रिसिटी एयर के अंदर फ्लो कर रही है उसकी वजह से हमें क्या दिखती है, लाइट दिखती है। देखो यहाँ पर दिस इज अ डायग्राम कि यहाँ पे दिस इज अ क्लाउड, ये हमारा क्या है, पूरा क्लाउड है। अब जो ये एयर है वो कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। एयर कहाँ मूव कर रही है, एयर मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ एयर करंट कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ड्रॉपलेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड दिस इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कि व्हेन जो चार्जेस हमारे जो एक्यूमुलेट होते हैं वो वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे एक्यूमुलेट होता है, डाउनवर्ड ऑफ द क्लाउड एंड पॉजिटिव चार्ज कहां एक्यूमुलेट हो गया, अपवर्ड साइड ऑफ द क्लाउड। ये सारा हमारा पॉजिटिव चार्ज कहां है, अपवर्ड साइड में है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, डाउनवर्ड साइड में है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो ये गैप आ गया, तो ड्यू टू दिस गैप यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइटनिंग जनरेट हो जाती है। This is the light. So what happens is when accumulation of charges and the negative charge accumulate downwards of the cloud and positive charge accumulate upward direction of the cloud. Positive charge कहाँ accumulate हो रहा है, upward direction of the cloud, और negative charge कहाँ accumulate हो रहा है, downward side of the cloud. और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो गैप आया है, तो ड्यू टू द इसकी वजह से क्या जनरेट होती है, लाइटनिंग जनरेट होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन was an American scientist who in 1752 discovered and proved that lightning and spark produced from these clocks are all same things। कि कई बार जो हम क्लॉक्स रब करते हैं उस टाइम कई बार स्पार्क जनरेट होता है। ये स्पार्क और जो हमारे एनवायरनमेंट में लाइटनिंग हो रही है दिस इज अ सेम प्रोसेस। ये तो कैसे है, ऑल सेम थिंग, दोनों में क्या है, ड्यू टू द चार्जेस, चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, लाइटनिंग जनरेट हो रही है। तो इट मींस कि जो स्पार्क है और लाइटनिंग है ये किस वजह से जनरेट हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस। इस तरीके से लाइटनिंग जनरेट होती है। ये और ये बीच में ये एक कोन है, यहाँ पे इस तरह से घूम के आ रही है, ये अर्थ है तो एक्यूमुलेशन में अर्थ हो रहा है। इस तरीके से कई तरह से लाइटनिंग क्या होती है, जनरेट होती है। कई बार ये हमारे जैसे यहाँ पर आ गई, कई बार ये हमारे हार्मफुल भी हो जाती है। नाउ and what is the reason of accumulation of charges? Accumulation of charges का क्या रीजन है? This is the electrical discharge. Electric discharge. Electric discharge की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि the process of flow of charge from cloud to cloud or from cloud to earth due to the separation of positive and negative charges is called an electric discharge. Okay. What is electric discharge? Separation of positive and negative charges. This is known as the electric discharge. And what is the reason of separation of positive and negative charges? When air current moves upward direction and the droplets है, the water droplets move downward direction. So due to the movement of this, that जो accumulation of charges and जो separation of charges it occur. जो separation होता है charges का वो इस वजह से होता है कि जो एयर करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वाटर और ड्रॉपलेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो thus the process of flow of charges from cloud to cloud, ये एक क्लाउड है, cloud to cloud और from cloud to earth, this is our earth, ये क्या है हमारी earth, तो cloud to earth, cloud to cloud, इस तरह से।
ये देखो discharge within cloud between negative base and positive cloud. कि अगर हम सिर्फ when we talk about in a single cloud, अगर हम सिंगल क्लाउड की बात करें तो इस सिंगल क्लाउड के अंदर क्या है जो सेपरेशन है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया टॉप ऑफ द क्लाउड और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है बॉटम ऑफ द क्लाउड. तो यहाँ पे भी क्या जनरेट हो रहा है स्पार्क जनरेट हो रहा है. दिस इज द इंट्रा क्लाउड. ये क्लाउड के अंदर है. So that's why the separation of the cloud this is intra cloud. तो जो नेगेटिव बेस है वो कहाँ है बेस पे आ गया और पॉजिटिव कहाँ गया टॉप. See it discharge between the negative and positive area of two clouds. कि यहाँ पे क्या हो रहा है सेपरेशन कि जहाँ पे दिस क्लाउड में यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है और जहाँ पे क्या जनरेट हो गया है नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे भी क्या जनरेट हो रहा है स्पार्क जनरेट हो रहा है. इट मींस कि ये क्या हो जाएगा इंटर क्लाउड कि यहाँ पे जो स्पार्क जनरेट हो रहा है दिस इज नोन एज द इंटर क्लाउड और यहाँ पे क्लाउड के अंदर ही जो स्पार्क जनरेट हो रहा है दिस इज द इंट्रा क्लाउड. नाउ discharge between the negative base of a cloud and the positive ground below it cloud to ground. तो यहाँ पे ये हमारी पॉजिटिव है. तो जो अर्थ पे जनरेट होता है वो कौन सा चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज. ओके और जो ये क्लाउड में जनरेट हुआ है बॉटम साइड में ये कौन सा है नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पार्क जनरेट हो जाएगा. ओके ये क्या हो गया क्लाउड टू ग्राउंड. ये वाला स्पार्क कौन सा हो गया क्लाउड टू ग्राउंड. और इंट्रा क्लाउड क्लाउड के अंदर ही जो स्पार्क हो रहा है इंटर क्लाउड क्लाउड एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के बीच में जो जनरेट हो रहा है. नाउ स्टोरी ऑफ लाइट. What is the reason? What is the story? क्या स्टोरी है लाइटनिंग की. During the thunderstorm, the hot air moves upward while the rain drops fall down. याद रखने पड़ेगा कि जो hot air है वो कहाँ मूव कर रही है upward direction में मूव कर रही है और जो rain drops है वो कहाँ मूव कर रही है downward direction में मूव कर रही है. Okay. This leads to a separation of charge in the atmosphere. ये क्या कर देती है चार्ज को सेपरेट कर देती है. As a result, negative charge get accumulate in the lower edges of the cloud while positive charge accumulated at the upper edges. तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ accumulate हो जाता है lower edge पे और पॉजिटिव चार्ज upper edge पे. The ground is accumulate with a positive charge all over. ग्राउंड पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ग्राउंड पे चार्ज कौन सा जनरेट हो जाता है पॉजिटिव ऑल ओवर सब जगह. दिस चार्ज बीइंग टू मल्टीप्लाई ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन विंड्स एंड रेनफॉल. ये कब इंक्रीज हो जाता है जब बहुत ज्यादा विंड एंड रेनफॉल होती है तब ये क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है सेपरेशन और ज्यादा बढ़ जाता है. Although the air is a poor conductor of electricity due to heavy charges, it is unable to restrict the electric flow after some time. वैसे भी मैंने बताया कि आपको एयर क्या होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बहुत ज्यादा चार्जेस डेवलप हो जाते हैं इसलिए वो भी क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देती है. The negative charge and positive charges meet which result in the production of electric spark. जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या है मिलते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है इलेक्ट्रिक स्पार्क. In the form of strike of light are accompanied by a sound. By a sound की जो आवाज आती है तो उससे क्या होता है वो स्ट्राइक करती है ऑफ लाइट accompanied by a sound. साउंड के थ्रू क्या करती है स्ट्राइक करती है. The strike is called lightning and the whole phenomena is called electric discharge. तो जो लाइट जनरेट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं स्ट्राइक जो कर रही है उसे लाइटनिंग कहते हैं और इस पूरे को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स. टू और मोर क्लाउड्स में भी क्या होती है जनरेट हो जाती है. नाउ देयर आर सम लाइटनिंग सेफ्टी स्टेप्स टू फॉलो. कई बार जब लाइटनिंग होती है तो हम क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को सेव कर सकें. आउटसाइड द हाउस अगर हम हाउस के बाहर हैं तो फाइंड अ सेफ प्लेस और शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री. हमें स्मॉल ट्री के अंदर शेल्टर ढूंढना चाहिए. इफ इनसाइड अ कार और व्हीकल इसके इनसाइड विद डोर एंड विंडोज शट
के अंदर हमें विंडोज को भी हमें बंद करना चाहिए और कार के अंदर ही रहना चाहिए। इसके अलावा टॉप मेटल पोल से दूर रहना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, स्टैंड क्राउच विद योर हेड इन बिटवीन योर हैंड्स। हमें हैंड्स के बीच में अपने सिर को रख के बैठना चाहिए कि डू नॉट ग्राउंड, हमें ग्राउंड पे नहीं बैठना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, इंस्टेड क्राउच विद योर हेड इन द बिटवीन योर हैंड्स। ओके, और अगर हम इनसाइड द हाउस के अंदर है तो अवॉइड कांटेक्ट विद टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, उनके कांटेक्ट से बचना चाहिए। अवॉइड बाथिंग नहीं करनी चाहिए। अनप्लग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको हमें क्या करना चाहिए, अनप्लग करना चाहिए। और कई बार जो लाइटिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे गिरती है तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। What is lightning conductor? The lightning conductor has to protect buildings during lightning. तो lightning conductor क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को ड्यूरिंग लाइटनिंग के टाइम पे। वो क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है। It consists of a metal rod that is taller than the building, which is installed within the walls during construction. They run all the way to the earth and act as a direct passes for electric डिस्चार्ज ड्यूरिंग लाइटनिंग। कि मतलब इस तरीके से मेटालिक रोड्स होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी अपवर्ड साइड होती है बिल्डिंग से ऊपर और पूरी बिल्डिंग में ये कनेक्ट करती है। और कहां तक जाती है, अर्थ तक। जहां पे पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट करके ये लास्ट में कहां चली जाती है, अर्थ तक नीचे। इसको लास्ट में अर्थ तक हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। Now, when the building is being constructed, ये कब लगाई जाती है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही ये हमारी लगा दी जाती है। Metallic rod having height more than building is placed in the walls of the building. जो metallic rod है वो ज्यादा ऊपर लगाई जाती है walls के। Okay, one end of the rod is in the air while the other end is buried inside the earth. One कहाँ पर होती है, एयर के अंदर होती है, और सेकंड कहां पर होती है, अर्थ के अंदर होती है। This rod is a conductor and hence during lightning it allows the flow of electric charge to the ground. तो जैसे ही कोई लाइटनिंग आती है, लाइटनिंग कहां पर आ जाती है, इस चार्ज यहां पर आ जाती है लाइटनिंग, और सीधी फिर वो कहां चली जाती है, नीचे अर्थ के अंदर चली जाती है। मेटालिक रॉड है, ये क्या करती है, अलाउ करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां फ्लो करती है, ग्राउंड तक ये फ्लो करती है। ओके, नाउ थैंक यू। In this topic we discuss about the lightning. Okay, in the next video, next topic we discuss about the earthquake. Thank you.